Okay, so we'll continue after multiple correct of 4.3 DPP of chemical kinetics. उसके पहले I hope no doubts are there. Okay, let's take up the 17th question of DPP 4.3, which is match the column type. So you have to match the graphs with the corresponding order. So if you look at the first graph, which is AT versus T having a negative slope, which order represents this graph? Zero order. Zero order, because this graph is related with the equation AT equal to minus KT plus A naught, and this is for a zero order reaction. Okay. Next is reciprocal of concentration versus time. Now reciprocal of concentration कौन से order में आता था? Second order. Second order. So this would represent a second order. And what was the IRL for the second order? KT is equal to 1 upon KT minus 1 upon A. Correct. KT equal to 1 upon AT minus 1 upon A naught. तो इसको y equal to mx plus c relation में लेकर आओगे, तो this represents the second order का IRL. Next is the reciprocal of square root of the concentration versus the time. Now square root है मतलब ये definitely कौन से order को represent कर सकता है? Second order. Half order, sir. Half order. ठीक है, इसका आप IRL डिराइव भी कर सकते हो जैसे हमने 0 फर्स्ट और सेकंड के लिए किया है, बट यहाँ पर 1 बाई रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये डेफिनेटली हाफ ऑर्डर के रिलेटेड है, तो ये डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. एंड द लास्ट वन इज द ग्राफ ऑफ log dx by dt. व्हाट इज dx by dt? Rate. So it's log of rate. And what is a minus x? AT. The concentration after time t remaining वाला 80. और यहाँ पर दिया हुआ है a slope of angle 71.55 degree. Now obviously एक ही ऑप्शन बचा है वो थर्ड ऑर्डर का. आंसर तो इसका थर्ड ऑर्डर है, बट हाउ डू वी गेट दिस? Tell me, how do we represent the rate law for nth order reaction? K A raised to N. Rate is equal to k times a raised to n. So ये 80 होता है. अब इसका log अगर ले लेते हैं on both the sides, so I get log of rate equal to log of k plus n into log of 80. हाँ कि नहीं? Yes. Yes. Now, if you observe the equation which is given, the graph, then log rate is plotted on y-axis, log of 80 is plotted on x-axis. मतलब this particular graph represents y equal to mx plus c. मतलब the slope of this graph actually represents the order. Correct. Yeah. So the slope of this graph, that is m, represents the order, and slope is 10 of the angle, 10 theta. Now what is 10? 71.55. No idea. 3. तो ये 10 71.55 जो आता है वो 3 आएगा. उसके बेसिस पे we have this representing a third order reaction. How will we know our tan 71.55 is? See, normally ये 10 वैल्यू देना चाहिए, वो दिया नहीं है. वैसे भी मैच द कॉलम में 3 तो आपका मैच हो चुका था. ठीक है, या तो फिर 10 का कोई सिंपलर वैल्यू होगा या फिर कुछ तो आपको गिवन इंफॉर्मेशन में देना चाहिए. Okay. ठीक है, so that you will be able to calculate the tan of the angle. Fine.
But now all the graphs are revised for the corresponding orders. So, yeah, अच्छा question था. Next is 90. Yes. The half-life period of a reaction becomes 16 times when reactant concentration is solved नहीं halved. वो halved होना चाहिए मतलब reduced to half. The half-life period of a reaction becomes 16 times when the reactant concentration is halved. So order of the reaction is fifth order. How do you do this? So you gave a relation that P is directly proportional to 1 upon A naught raised to 1 minus. Yes, for any nth order reaction, the half-life is inverse to the initial concentration raised to n minus 1. So T half or the half-life period is becoming 16 times when the concentration is halved. Now, ये concentration अगर half हो जाएगा, so this is basically proportional to 2 raised to n minus 1. हाँ कि नहीं? Yes. And 16 is nothing but 2 raised to 4. So just equate कर लो दोनों तरफ. So 4 will be equal to n minus 1 and therefore n, which is the order, will become equal to 5. Halved मतलब ये a naught half हो जाएगा ना, तो 1 upon 2, that is why 2 ऊपर चला जाएगा. तो आपको just equate करना था and the answer would be a fifth order reaction. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So let's move to DPP 4.4 now. One second, क्या हो गया? One second. Is the screen visible now? Yes, sir. Okay, 4.4 is about rate method and Ostwald's method. ये सबसे easiest DPP है, जहाँ पर the tabular form data is given and you have to find out the order. उसका मैंने shortcut भी आपको बताया हुआ है. So let's start with the sixth question. For a chemical reaction A to B, the rate of reaction increases by a factor of 1.837 when the concentration of A is increased 1.5 times. So order of the reaction with respect to A is 1.837 is equal to K times of 1.5 raised to X. 1.5. So X Correct. times of तो आपको करना क्या है, जहां पर रेट है वहां पर 1.837 लिख लो और जहां पे कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे 1.5 रेस टू पावर कर दो. अब व्हाट पावर ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 1.837? 1.5. 1.5 only. So it's 1.5 order reaction. 1.5 is the order. So option B would be the answer. So I did like so like the rate is equal to K raised to N, and then 1.837 times rate is equal to K into 1.5 times A raised to N. And then तो आपने बाद में रेशियो लिया तो रेशियो में यही बचेगा ना. Yeah. हाँ, तो वो लॉन्ग कट मेथड क्यों करना है? Basically, when you take the ratio, you'll get the same thing. Okay. Yes, sir. Move to 11. For a hypothetical reaction A plus B giving you C, suggest the order from the given data. So concentration of A, concentration of B is given, and the rate of reaction is also given. So we have the values 0.25, 0.5, and 0.5. And dusra 0.25, 0.25, and 0.5. And the rates are 3 into 10 power minus 3, 6 into 10 raised to minus 3, and this I can write 12 into 10 raised to minus 3, so that orders are, the powers are same.
अब इसमें what was the shortcut given? Take B constant and Constant. C. B को power. constant रख के A का change देखो. So keeping the B constant, first two values, A is getting, Double. Twice. so the rate is also getting, Double. meaning A का order is 1. 1. अब B के order के लिए keep A constant. A constant. Sorry, ये 5 है. हाँ, so now A constant रख के B का double हो रहा है. So the rate is also getting, Double. Double. मतलब B raised even to B 1. is 1. first order. मतलब your rate law will be R equal to K into A raised to 1 and B raised to 1. The net order of the reaction will be equal to 2. It's a second order reaction overall. समझा? Yes. बस ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं. 15th स्टेटमेंट फॉर्म में है, वो मैं ले लेता हूँ. For the chemical reaction given A plus B plus C giving you E, the rate of reaction is doubled when concentration of B was doubled. Meaning B raised to 1. B का order is 1. And when the concentration of both A and B were doubled, the rate becomes doubled. A A raised to raised to 0. 0. क्योंकि दोनों डबल किया, खाली रेट डबल ही हो रहा है, मतलब वो तो इफेक्ट बी का था, तो ए का कोई इफेक्ट नहीं, मतलब इट्स जीरो ऑर्डर. एंड व्हेन बी एंड सी बोथ आर डबल्ड, द रेट बिकम्स क्वाड्रपल्ड. C B is raised to 1. C is also a first order kinetic. 1. Sorry. So now which options are correct? Order A with raised to- respect to B, A and C are 101 respectively. Yes. Yes. The reaction is first order with respect to B and C and total order is 2. Yes. 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 The rate law is R equal to K into B into C. Yes. Yes. And the rate law is can't be. So option D to ruled out. Fine. So could you just repeat this question? I got lagged out. So the statement given was the rate of reaction is doubled when concentration of B was doubled. That statement indicates that B follows the first order kinetics. Yes, Ambika? Yes, yes. Then when both A and B were doubled, the rate becomes doubled. So B के related, the rate was already getting doubled. Now when both are doubled, again the rate is doubled only, meaning A will have no effect on the rate. So it has to be following the zero order kinetics. And when B and C are doubled, the rate is getting quadrupled. So B से double हो रहा था, C से भी double हो रहा है. इसका मतलब now the C is also a first order kinetics. Okay. Got it? Yes, sir, yes. 16th, the bromination of acetone that occurs in acid solution is represented by. So acetone is undergoing bromination and it is giving you the product as CH3, CO, CH2. It's not Br2, it should be Br only, plus HBr. यहाँ पे 2 जो दिया है वो correction है. So now the information given is bromine concentration, acetone concentration, and H plus concentration versus the rate. So bromine concentrations are 0.05, 0.1, 0.1, 0.05. Acetone concentration is 0.3, 0.3, 0.3, and 0.4. H plus concentrations are 0.05, 0.05, 0.1, and 0.2. And the rate is 5.7, 5.7, 12, and 31. These are all 10 raised to minus 5. So basically, I have just converted into the same powers. Fine. Yes, sir. Now, once again, you have to follow the same method. To find the bromine ka order, you have to keep CH3COO and H plus acetone and H plus, both constant. And they are both constant in the first two data. So यहाँ पर keeping acetone and H plus concentration, bromine is getting double. Double. But the there's rate not is Rate is not unchanged, the same. meaning bromine has Br2 raised to 0. zero order. हो गया ना? Done, sir. Done.
क्योंकि अब आप ऑप्शंस में देखोगे ओनली वन ऑप्शन इज नॉट हैविंग ब्रोमीन एंड दैट इज B is व्हाई द correct. करेक्ट आंसर वुड बी बी, बट यहाँ पे Oh. पूछा है Not correct one. not correct. So since Which is B is C, D. correct, the answer would be A, C and A, D. C, D. ठीक है, अब मान लो आपको बाकी ऑर्डर अगर फाइंड करना होता तो सेम वे में यू वुड हैव केप्ट द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ अदर टू कांस्टेंट। जैसे अभी एसीटोन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, सॉरी ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। सो वी कैन टेक लाइक द थर्ड एंड फोर्थ डेटा ओनली बिकॉज देयर इज अ चेंज in the third and fourth data only, right? So, but there's a change in हाँ, PR. but bromine का change doesn't affect the rate because it is already confirmed to be a zero order kinetics, ना? So the H plus. हाँ, तो अभी देखो H plus का आप But फाइंड then, कर सकते हो। according to the rate, calculation will become a bit tedious. It's like a first order, I mean, more or less. H plus का. हाँ, अभी H plus का ढूंढने के लिए you can take second and third data because in that second and third data both are remaining constant. So keeping the bromine constant, acetone constant, H plus is getting Double. doubled. So the rate is Double. Doubled somewhat. almost getting doubled, 11.4 आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर ना होकर लेस देन फर्स्ट होगा, बट ऐसा कुछ डेसिमल या फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है। मतलब दिस इज बेसिकली द प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड रेट विथ मे बी सम एरर्स यू कैन से, ठीक है। तो यू कैन कंसिडर दिस टू बी 6, 6 and 30 so that you can get the exact relation. समझा? Yes. तो ये भी कंफर्म हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अब इन दोनों का ऑर्डर पता है तो आप एसीटोन का ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हो। समझा? So how to do that? अब देखो एसीटोन के लिए यू कैन पिक अप द थर्ड एंड द फोर्थ डेटा। तो थर्ड फोर्थ डेटा में ब्रोमीन इज डबल्ड बट इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट, तो एनीवेज इसका इफेक्ट तो है ही नहीं, ठीक है। अब H प्लस को डबल कर रहे हो तो रेट इज गोइंग टू गेट Double. डबल। अब Double. व्हाट इज द चेंज फॉर एसीटोन 0.3 से 0.4 कितना टाइम बढ़ रहा है? 1/1/3. One time. 1/1/3 Yes, sir. Fourth or 1.6. third. है ना। तो अब वही यहाँ बात। पर ये 1/1/3 से बढ़ रहा है और ये डबल हो रहा है, और यहाँ पर रेट इज गोइंग टू गेटिंग इंक्रीज फ्रॉम 12 to 31. 30 ले 12 to 30 हाँ, मतलब right. कितना हो गया? 0.5 or 2.5. 2.5 something. 2.5 के आसपास, Yeah. ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1.33 and 2, और ये हो गया 2.5 टाइम्स। तो इसके डबल होने से रेट डबल हो रहा है, और इसके 1/1/3 होने से रेट कितना हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो 12 से 24 हुआ लेट्स से फॉर द H प्लस, और 24 से 30 हो रहा है, इसका मतलब हाउ मच इज द इंक्रीज? 6. 6 टाइम्स। No, not 6 times. कितना हो गया? 0.3, हाँ 1.3, 1.4 maybe. हाँ, तो और ये कितना हो रहा है? 1/1/3 मतलब कितना हुआ? 1.3 है ना, Yeah, 1.3. समझा? व्हाट शुड बी द ऑर्डर देन? First सी, order. हाँ, क्योंकि यहाँ पर 12 to 31 जो है उसमें H प्लस के रिलेटेड वी आर कंफर्म्ड दैट द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डबल्स, द रेट ऑल्सो डबल्स। ब्रोमीन का डबल हुआ तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो बाकी जो इफेक्ट है वो एसीटोन के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हो रहा है। तो रिमेनिंग अगर आप देखोगे तो ये 1/1/3 और ये भी ऑलमोस्ट 1/1/3 आ रहा है ना। मतलब इसका रेट जितना, इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ा उतना ही रेट बढ़ रहा है यहाँ पर। मतलब दिस ऑल्सो विल फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। So if we take the rate to 2/3 now, then we can get it. 2 2/3। Yeah. हाँ मतलब नियर अबाउट, मैंने एक्चुअली इसको अप्रोक्सीमेट किया ना 31 को,
30 कर दिया है इसके लिए. So how is it 1/3? 0.3 से 0.4 कितना होता है? इंक्रीज 0.1. कितना हुआ? 0.1. हाँ, तो कितना टाइम्स ये बढ़ा? जैसे अभी 0.1 से 0.2 इज डबल्ड ना, Oh, right. वैसे. ठीक है. सो बेसिकली ये इतना जरूरत नहीं है. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए यू विल ऑलवेज फाइंड एन ऑप्शन वेर इन जिसका ऑर्डर 0 है, दैट वुड बी मिसिंग इन वन ऑफ द ऑप्शंस, एंड दैट वुड बी योर आंसर बिकॉज द रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन. और मान लो आपके पास अगर ये कांस्टेंट वैल्यूज नहीं है, जो शॉर्टकट मैंने बताया, then you can just follow a simple traditional method that assume the rate is equal to k times bromine into acetone into H plus, and all the orders are unknown, so I take it as X, Y, and Z. Now, according to the values given, you can frame 3 to 4 equations. जितना डेटा है उतने इक्वेशंस बनेंगे कि नहीं? So but only one equation बनेगा ना. अरे भाई, रेट की जगह ये वैल्यू डालो, ब्रोमीन की जगह उसका कॉन्सेंट्रेशन, एसीटोन का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको एक इक्वेशन मिला इससे फर्स्ट, राइट? 5.7 into 10 raised to minus, समझा? 4 इक्वेशंस मिलेगा कि नहीं? 4 equation. अब 4 इक्वेशन और 3 अननोन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? Okay sir. ठीक है. तो ये अपना ट्रेडिशनल मेथड है. इसी को शॉर्टकट में मैंने क्या बोला कि अगर कांस्टेंट वैल्यूज डायरेक्टली दिखता है तो कीप वन कांस्टेंट एंड चेक द चेंज इन दी अनदर पार्ट, and accordingly you can find out. Could you repeat the traditional method? Traditional method is, this is how we would have written the rate law if all the orders are unknown. Yes. So based on the first data, you have to just substitute the values. The rate is 5.7 into 10 raised to minus 5 equal to k times bromine concentration is 0.05 raised to x, 0.3 raised to y, and 0.05 raised to z. Take the second equation. So I'll get 5.7 into 10 raised to minus 5 equal to k into 0.1 raised to x, 0.3 raised to y, and 0.05 raised to z. ठीक है. Now solve the two equations, divide कर लो. So on dividing 1 and 2, I'll get 1, k cancel. This is 0.05 upon 0.1. तो ये क्या हो जाएगा रेशियो लेने के बाद? 1/2 raised to x. ये कैंसिल और ये कैंसिल, y वाला टर्म और z वाला टर्म, हाँ कि नहीं? Yes. अंडरस्टूड और नॉट? Yeah, I got it. Thank you. ठीक है. सो हाफ रेज टू व्हाट इज 1? हाफ रेज टू व्हाट इज 1? 0. 0. तो x आ गया ना 0. एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 ना? Yes sir, yes sir. Yes, sir. बस Got it, तो got it. वही शॉर्टकट आई जस्ट यूज डायरेक्टली. दिस इज हाउ यू कैन डू द ट्रेडिशनल मेथड. Yeah. फाइन. Yes sir. Yes sir. Okay. Then similar questions ही है. 17th वाला देख लो. Match the column type. Rate law is given and you have to find the order. First one, rate equal to k into intensity of light follows 0 order. 0 order. photochemical reactions Chemical होते हैं ना ये. So Yeah. A matches with Q. Then rate equal to k into A raised to 1, B raised to 1. Second order. P and R. Second order है. Zero order ruled out है. First order when A is in excess. Yes sir. Yes. Yes sir. Yes. मतलब B will match with P and R. और second order when B is in excess ruled out. मतलब ये मैच करेगा P और R से. C, rate equal to K A 3 raised to sorry A raised to 3/2 and B raised to half. Second order. Second order. Second order. Second order. और कोई मैच कर रहा है? फ्रैक्शनल ऑर्डर है ना, तो और कोई मैच करेगा ही नहीं. और D में A raised to 2 B raised to 1.
as second order when B is SNR. like आर एंड एस दोनों मैच करेगा, बिकॉज जब ए एक्सेस में Alright. होगा तो फर्स्ट ऑर्डर और बी एक्सेस में होगा तो सेकंड Second ऑर्डर, order. मतलब आर एंड एस बोथ विल मैच. अंडरस्टूड. Yes. 18th one. 18th, the following rate data were obtained at 303 Kelvin for the following reaction of 2A plus B giving you C plus D. Again, there are these values given: concentration of A, concentration of B, and the rate. So A ka concentration is 0.1, 0.3, 0.3, 0.4, and B concentrations are 0.1, 0.2, 0.4, 0.1. And So- rate is 6 into 10 is to minus 3, 72 into 10 is to minus 3, 288 into 10 is to minus 3, and 24 into 10 is to minus 3. सेम पावर्स में लिखो. अब सेम चीज अप्लाई करो. बी का ऑर्डर ढूंढने के लिए कीप ए टू बी कांस्टेंट. तो कीपिंग ए टू कांस्टेंट, बी इज गेटिंग double so rate is getting, quadruple. Twice, na? so this is a second order kinetics. So हाँ, from 70. Oh, sorry. 72 से आपने 2.88 देखा, लेकिन वो 288 into 10 is to minus 3 है ना, समझा? Yeah. तो ये सिंपल ही था. हाँ, 7.2 to 288, na? 7.2 to 28.8 then. अरे उसको 10 पावर माइनस 3 में कन्वर्ट करो ना बाबा, सब पावर सेम होना चाहिए ना मुस्तनसिर. So that is true, but what have you written? Like 7.2 to 288? Like what have you written? 72, ये मैंने 72 लिखा है, 7.2 नहीं लिखा है, बिकॉज आई हैव कन्वर्टेड टू 10 पावर माइनस 3. क्या कंफ्यूजन है? 72 से 288 4 टाइम्स हुआ ना. हाँ. Okay. तो b को डबल किया, रेट क्वाड्रपल हो रहा है, तो b सेकंड ऑर्डर. Yeah, raised to 2, yeah. ठीक है. सिमिलरली a का ढूंढने के लिए b को कांस्टेंट रखो, तो फर्स्ट एंड फोर्थ डेटा ले लो. So keeping b constant, a is getting Triple. quadrupled, rate is getting Yeah. Quadruple. Quadruple. again quadrupled. So a is following a First order. First order. first order kinetics. हो गया. अब आपको rate constant ढूंढना था. So to get the rate constant, what would be the rate law now? Rate law. Rate is equal to K. A raised to 1, B raised to 2. ठीक है. Now to get the value of k, you just substitute the value of rate a and b from any of the data. आपको k की वैल्यू सेम ही मिलेगी. तो फर्स्ट डेटा ले लेते हैं. तो 6 into 10 is to minus 3 is equal to k into 10 is to minus 1 into 10 is to minus 1 का स्क्वायर. So 10 is to minus 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है, k की वैल्यू डायरेक्टली 6 हो गई. So we can keep 1 and 4 also as constant. हाँ, But beach mein, I mean, can't there be anything that is affecting it? I mean, beach mein, anything else which is making it double, triple, or anything of that sort? I mean, otherwise कोई you भी would ले just take लो. the very next step, right? To get the order or to get the rate constant you are saying? To get the order with respect to A or B. You can take any random values, कोई problem नहीं है उसमें. जैसे अगर first and second लेते हो, so now we already know that B is second order. So if B is doubled, the rate would get quadrupled because of that. Yes. So this would change from 6 to how much? 36. Quadrupled. 20. Double का quadrupled मतलब 24. 24 हो जाएगा ना. And A का अभी ट्रिपल हो रहा है, तो 24 से 72 क्या हो रहा है? Triple, right. समझा? तो ऑर्डर First नहीं order. चेंज होगा. यू टेक एनी रैंडम डेटा. आपको एक ऑर्डर मिल गया, फिर आप कोई भी दो डेटा ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. समझा? Okay, sir. Okay, got it. एनी डाउट एनीवन? यस? No, sir. Okay. Now come to the comprehension type.
Suppose 50 bacteria are placed in a flask containing nutrients for the bacteria so that they can multiply. A study at 35 degrees Celsius gave the following results. So result में क्या है? Time in minutes versus the number of bacteria. So initial, then after 15, 30, 45 and 60 minutes, we have the number of bacteria 100, 200, 400, 800 and 1600. This is what is given. So as per the comprehension, the first question, this multiplication of bacteria follows what order? First order. First order. And how do you verify this? Double over. So After for every 15 minutes, the values are getting. Double. Double. So what this indicates? half-life period In is a way, one. half-life. In a way, half-life, and also it indicates that half-life is not dependent on what is the initial number of bacteria available, right? बराबर ना? और ये चीज हमने कौन से ऑर्डर के लिए पढ़ा है? First order. First order. ठीक है, so 20 का first is first order, मतलब B. Then the rate constant for the reaction is now through this, basically for every 15 minutes, the number of bacteria is getting doubled. मतलब 15 minute basically becomes the T-half. half-life time. हाँ कि नहीं? And if you know the half-life time, how do you find the rate constant for a first order? So 0.693 by K. Yes. So if we don't see the half-life, but if we see the rate, means the rate is number of bacteria per minute multiplying per minute. So if we take a slope, so 200 by 15, something like that, will we get the answer? मतलब you're trying to plot a graph and then take a slope. Yeah, that will be rate only, no? Rate is equal to K times the number of bacteria raised to the order. Yeah, so will that be correct? Try कर सकते हैं, कोई issue नहीं है. So rate versus टाइम से कैसे रिलेट करोगे आप ग्राफिकली? So we know rate is what number of moles upon total time, the time taken. So moles per second. So in that way, number of bacteria per second. Then you draw a line, and that line would be a straight line, and uska slope would be the rate. Slope would be the Rate. order. Rate. हाँ, will rate. be the order. moles upon time बराबर. कर सकते हैं. I think you should get the answer. But generally ऐसे टाइप के डेटा के लिए आपको डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन पता ही है. So that you can try, because rate is either the change in concentration upon time or change in moles upon time or change in volume upon time. Either ways you can take. But so in that way, I didn't get the answer correct. It's something around 13.33 if we do 200 by 15. 200 by 15. Okay. 13 point something मिलेगा. Sir, हाँ, actually rate change हो रहा है. My bad. Sorry. So slope would change, I think. Or will it be constant?
So it's getting double, not मतलब, it's not getting added by a certain value. डबल स्लोप तो सेम ही रह रहा है ना, 200/15, 400/30, 800/45, 600/60, सब सेम ही वैल्यूज आएगा, देखो ना। तो सर आंसर इनकरेक्ट है। नहीं, एक मिनट, 800/45 अगर करोगे तो वो सेम नहीं आएगा, जहाँ पे 800 है वहाँ पे 60 मिनट्स हो जाना चाहिए, तो वो स्लोप फिक्स रहेगा, स्लोप चेंज हो रहा है। हाँ, स्लोप चेंज हो रहा हूँ। हम्म तो सर अभी ये देखो, हाँ ठीक है, अंडरस्टूड। हम्म। बट सर इसमें फिर हम लोग पी हाफ कंसिडर कर रहे थे, हाफ का इक्वेशन, तो इज इट करेक्ट? कहाँ पे? So you to calculate a constant, you just wrote the equation. हाँ, तो एक बार ये फर्स्ट ऑर्डर कंफर्म हो गया एंड वी नो द हाफ लाइफ, वी कैन डायरेक्टली गेट द रेट कांस्टेंट ना। But this is not the half life, ना technically. दिस इज ना, बिकॉज सी अगर आप रिवर्स में देखो तो फॉर एवरी 15 मिनट्स द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आर गेटिंग डबल्ड ओनली। तो जैसे जैसे टाइम 15 मिनट्स हो रहा है, द रेट और यू कैन से द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आर गेटिंग डबल्ड, बिकॉज रेट क्या है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया ही है ना। Yes, sir. बेसिकली ये आपका हाफ लाइफ ही है। So once you know the half life, you can directly calculate K would be equal to 0.693/15. That's approx 0.7/15, which is 70, 0.0460. 4 point something into 10⁻²। मतलब 0.04 के आसपास आना चाहिए, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। So the answer you get would be option A. And after finding K, you have to find the rate of the reaction initially. Now, K into number initially of बोला bacteria. मतलब it will be K into what value of the bacteria? 100. 100, So just multiply कर लो and you get 4 point something. 4.6. A. समझा? So this data say just first part, once you get the order, then you can find the half life, you can find the rate constant, you can find the rate of the reaction at a particular concentration or the data which is given. अब ये वॉल्यूम में भी हो सकता है, प्रेशर में भी हो सकता है, या फिर जैसे यहाँ पर बैक्टीरिया दिया है उसके टर्म्स में भी हो सकता है। Got it? Yes, sir. Now 4.5 में sixth question. Which of the following graph is correct for the enzyme catalysis? C. See, What are enzymes? biological catalyst. They are biocatalysts or biological catalysts. And enzymes work only at optimum temperature. Matlab, their effect is maximized when it reaches the optimum temperature. But if it is not the optimum temperature, the rate or the working of the catalyst would be very low, or it would not be having that particular effect which is expected. ठीक है, तो हमेशा उसका जो रेट का मैक्सिमम होगा दैट विल बी एट अ पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर। उससे पहले या उसके बाद के कोई भी टेम्परेचर में उसका रेट डिक्रीज होगा। सो द ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, एंड एंजाइम काम कैसे करता है? सो बेसिकली एंजाइम रिएक्ट्स विद समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, जो हमने ऑर्गेनिक में रिएक्टेंट को नाम दिया है। Yes or no? Yes, sir. So enzymes go and attacks the substrate and forms an activated complex, जिसको हम transition state बोलते हैं, बराबर? And then transition state breaks down to give you products, and the enzyme gets regenerated. Correct. Acha, now tell me, out of substrate and enzyme, which is in excess? Substrate. Obviously substrate. एंजाइम जो बायोकैटलिस्ट का काम करता है वो हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल रहेगा, बराबर? इसका मतलब दिस वुड फॉलो व्हाट?
kind of kinetics? Pseudo. Pseudo first order wala kinetics. Samjha? If one of the reactant is in excess, then it would always follow the pseudo order reaction wala kinetics. Fine. So So क्या? nothing. Question sir कुछ बोला? why is the catalyst so limited? See, enzymes are biocatalyst and biocatalyst का quantity हमेशा जब वो अटैक करता है तो इसका पूरा मैकेनिज्म जो रहता है ना, ठीक है, वो आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में डिटेल में है. That substrates are basically having a particular shape. So substrate and enzyme works in a form of lock and key mechanism. जैसे एक ताले की एक ही चाबी हो सकती है, वैसे एक सबस्ट्रेट का जो एंजाइम है वो पर्टिकुलर एंजाइम होता है. मतलब every biocatalyst have a specific function, and when the enzyme tries to attack the substrate, it has very small space wherein it can actually get attracted to the substrate. So that is why it is always the case that the substrate is in large amount and the enzyme is always in the smaller amount. And that's how the lock and key mechanism works to form the activated complex, and then it breaks down to reproduce the product along with the enzyme. Okay. Okay, sir. So I get it that in this, I mean, whenever it's in excess, it's a pseudo first order. But with respect to enzyme, can't it be second order? I mean, It can be. मैंने बोला pseudo order reaction है. Assume करते हैं अगर ये elementary reaction है, अगर ऐसा बोला गया है, then we can say it's substrate raised to 1, enzyme raised to 1. And if substrate is in excess, I can say rate is only proportional to enzyme raised to 1. Then it would be a pseudo first order kinetics. okay, so we're just assuming, na, right? Yes. Okay, fine. Okay. But this assumption holds true for almost all the biological reactions which involves the biocatalyst. इसलिए अगर एक statement आता है कि substrate enzyme कौन सा order follow करता है, then you can always say it's a pseudo first order kinetics. That assumption Okay, is practically true for almost all the biological reactions. समझा? Yes. Ninth one, the velocity of a reaction is doubled for every 10-degree rise in temperature. If the temperature is raised by 50 degrees Celsius, the reaction velocity increases by about 32 times. 32 times. 2 raised to 32. 5. 2 raised to 5. So हर 10 डिग्री में डबल हो रहा है. Now ये जो डबलिंग है for every 10 degree Celsius, this is related with a term called temperature coefficient. Temperature coefficient. ये एक नोट करके रखो हाँ. And this is indicated by mu. So when for every 10 degrees Celsius, whenever the rates are becoming doubled, we say the temperature coefficient is 2. If the rate were getting tripled, we would say the temperature coefficient is 3. And so on. समझा? Yes, sir. तो इसमें every 10 डिग्री में डबल हो रहा है और 50 डिग्री का रेंज दिया है, तो obviously it is 2 raised to 5, 32 is the answer. तो ये सिंपल था. ठीक है. अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है. द फॉर्मूला इज द रेट R2 by R1 is equal to the temperature coefficient raised to delta T by 10. Why we are taking delta T by 10? Because this temperature coefficient is defined for every 10 degree rise in temperature. It's always every 10 degree. मतलब हर 10 डिग्री में अगर वो डबल हो रहा है तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट डबल होगा. अगर वो ट्रिपल हो रहा है तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ट्रिपल होगा. Clear with that? Yes, sir.
So यहाँ पर अगर if I apply this particular relation in the question 9, what they are saying that the rates are getting doubled. मतलब R2 by R1 is 2 is equal to the temperature coefficient mu, and it's for every 10 degree rise. So every 10 degree rise मतलब the change in the temperature is 10 only ना. Yes, sir. So 10 by 10 ये 1 हो जाएगा. So 2 will be equal to mu. So ये mu जो है directly आपका value 2 हो गया. That's how we say temperature coefficient is 2. समझा? So delta T is the total change in this thing, or it's for every how much it changes? For every how much? अच्छा, Generally so, at every 10 degree के लिए define होता है. so mu can be defined as however, I mean, they give, right? So सिर्फ 10 degrees का ही रहता है. Yes. So can you repeat the अब देखो, calculation? एक 20-second question देखो, you will understand. 20-second. Integer type है. If the rate of reaction is 2.6 into 10 raised to minus 3 at 50 degrees Celsius and 7.02 into 10 raised to minus 2 at 80 degrees Celsius, what will be the temperature coefficient of the reaction? मतलब you are supposed to find what? Mu. Mu. ठीक है ना. R2 is always the rate at the higher temperature. तो कौन सा वाला rate R2 होगा? 7.0. 7.0. एंड अगर उसको सेम पावर में कन्वर्ट करो तो इट विल बी 70.2 into 10 raised to minus 3, and R1 will be the rate at the lower temperature, which is 2.6 into 10 raised to minus 3. I don't know mu, so mu raised to. Now this delta T for these two rates 30. is 30. So it will be 30 by 10 मतलब mu raised to 3. ठीक है. अब 2.6 and 70.2 ये डायरेक्टली 27 टाइम्स जाता है. आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा. एग्जैक्टली 27 टाइम्स जाता है. So now 27 is equal to mu raised to 3. So mu का what power? Third power gives you 27. 3. So here the temperature coefficient is 3. इसका मतलब क्या हुआ? अब हर 10 डिग्री सेल्सियस में रेट एक्चुअली क्या हो रहा है? ट्रिपल हो रहा है. समझा? तो 50 से जब 60 गया ट्रिपल हुआ, 60 से 70 ट्रिपल हुआ, 70 से 80 ट्रिपल. तो ट्रिपल 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 27 टाइम्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? So you're assuming delta T to be 10 degrees, no? ना 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 ना. Here the delta T is the temperature का difference for the two rates. This is the rate at what temperature? 80 degree ना? And this is the rate at what? 50 degree. So here the difference in the temperature will be related to 80 and 50. यहाँ तो आपको बोला था कि rates are getting doubled for every 10 degree rise. मतलब जो difference है temperature का 50 से 60 लो या 10 से 20 लो या 0 से 10 लो, उसका difference हमेशा 10 ही रहेगा. आके नहीं? Yeah. But here they have not said for 10 degree Celsius. They have asked for 50 to 80 का difference. इसलिए हमने delta T को 30 लिया, तो 30 by 10 3 आ गया. और फाइनली म्यू इक्वल टू 3 क्या समझा रहा है आपको? कि हर 10 डिग्री में रेट ट्रिपल होने वाला है. तो अब देखो 50 डिग्री सेल्सियस पे 2.6 into 10 raised to minus 3 था, तो 60 डिग्री में कितना होगा? So can you repeat? 50 डिग्री पे we are given that the rate is 2.6 into 10 raised to minus 3. So what will be the rate at 60 degree with mu equal to 3? 7.2. 10.8. इसका ट्रिपल हो जाएगा. इसको मैं x मान ले लेता हूं, तो ये 3x हो जाएगा. फिर 70 में कितना होगा? It's 9x. 9x. 80 में कितना हो जाएगा? 27x. 27. तो अब अगर आप 80 और 50 का रेशियो लोगे तो कितना आ रहा है? 27. समझा? Yeah. This is what is the concept of mu. For every 10 degree rise,
the rate is getting doubled, triple, quadrupled, that gives you the temperature coefficient value. And उसको calculate करने के लिए ये simple सा formula आपके सामने, समझा? Yes, sir. ठीक है, तो एक नया कॉन्सेप्ट था टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, मेक अ नोट ऑफ दिस. Okay. 12th one. By increasing the temperature by 10 degree, the rate of forward reaction at equilibrium is increased by a factor of 2. So the rate of backward reaction by this increase in temperature remains unaffected, increases by a factor greater than 2, decreases by a factor lesser than 2, yeah, also increased by a factor of 2. DD. Okay, at equilibrium, we know that the rates of the forward and the backward reaction are Same. same. तो जितना forward में change होगा उतना ही backward में change होगा, तभी तो reaction equilibrium पे रहेगा. तो simple conceptual question था, answer is option D. ठीक है. 13. For the reaction A to B in the gaseous state, delta H is 40 minus 40, sorry, and EF by EB is 2/3. Then EF and EB का values क्या होगा? How do you solve this type of question? EF is equal to 2/3 EB, na? हाँ. And the delta H is equal to EF minus EB. EB minus EF will give you 40. Yeah, sorry. तो बेस्ट मेथड क्या है, आप इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लो. सो डेल्टा एच इक्वल टू -40 इंडिकेट करता है इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड दिस वैल्यू इज ई फॉरवर्ड एंड प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट आपका ई बी है, हाँ कि नहीं? एंड द डिफरेंस ओवर हियर इज delta H. So delta H is equal to EF minus EB or EB minus EF. EB minus EB minus EF. EB minus EF will give you a positive value. Yeah, so it will be 40. Well, 40 is equal to EB अब minus. डेल्टा एच -40 दिया है, उसके हिसाब से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होगा ना, तो यू हैव टू टेक EF माइनस EB. ठीक है, ये आपका माइनस वैल्यू. अगर ये एंडो में होता, समझा, तो आपका ग्राफिकली चेंज हो जाएगा ना. Yeah. अंडरस्टूड. Changes, the equation changes. सॉरी. So the equation changes. हाँ, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ग्राफ से ही करो आप. तो बेसिकली ये EF माइनस EB ही होता है. आपका एक्सोथर्मिक में ये नेगेटिव आता है और एंडोथर्मिक में यही वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं, बिकॉज EF बड़ा होता है ना एंडोथर्मिक में. अरे हाँ कि नहीं? हेलो. हाँ sir. So delta H is always EF minus EB, but just in case of exo, it's negative because EF is lesser, and endo में वो positive आता है क्योंकि EF is greater. Simple. समझ में आ गया? हेलो. Yes. So now this EF is 2/3 of EB minus EB, and this is -40. So 40 will be equal to, ये हो जाएगा EB by 3, माइनस माइनस कैंसिल, EB हो जाएगा आपका 120. So the answer is option C. So, Hmm. suppose we instead of doing this, we can also see the options, like just divide EF and EB in the options. We can only see as the answer. 100% you can do that. कर सकते हैं. अगर दो ऑप्शन मैच करेगा तो फिर वैल्यू से सॉल्व करो, और एक ही मैच करता है तो डायरेक्ट आंसर करो, कोई इश्यू नहीं है. ओके. Yeah. Now multiple 16th one. Arrhenius equation. Can you go back? So I had 1014. बोलो.
1000 put something on the Okay. Madhav, you copied? Yes, sir. 14th. The activation energies of two reactions are EA1 and EA2 with EA1 greater than EA2. Activation energy for one reaction is greater than the activation energy for the second reaction. If the temperature of the reacting system is increased from T1 to T2, predict which of the following alternatives is correct. So you are being asked the ratios of the rate constants for the first case to the rate constants for the second case with the difference in activation energy where first का activation energy second से बड़ा है. ठीक है. Now how do you write the Arrhenius equation for temperature dependent rate constant? K is equal to A into E raised to minus A by RT. रेट डिपेंडेंस सॉरी टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट वाला आरएनएस इक्वेशन पूछा मैंने जहां पे दो टेम्परेचर्स इन्वॉल्व होते हैं उसका इक्वेशन क्या डिराइव किया था Log of K2 by K1 is हाँ. equal to EA by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. log of k2 by k1 is equal to the activation energy upon 2.303 r into 1 by t1 minus 1 by t2. ठीक है. नाउ यहाँ पे दो रिएक्शंस है. फर्स्ट रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है और सेकेंड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है और फर्स्ट का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है. ठीक है. और यहाँ पर ऑल्सो दे हैव गिवन T2 is greater than T1. Now with this T2 greater than T1, this part will always become positive. Yes or no? Yes. So if the activation energy for the first reaction is higher, the ratio of the rate constant will be higher. Yes. क्योंकि ये वाला टर्म पॉजिटिव है और अगर EA1 बड़ा है तो ये वाला रेशियो भी That would be great. ग्रेटर. समझा. अब यहाँ पर what they have given is rate constants are being given in the ratio of k and k dash. मतलब जो K2 है उन्होंने K डैश बोल दिया है और जो K1 है उसको K बोल दिया है. फर्स्ट रिएक्शन का हो जाएगा K1 डैश अपॉन K1 एंड सेकेंड का हो जाएगा K2 डैश अपॉन K2. Now what is the relation between them? With EA1 greater than EA2, what is justified? K1 dash upon K1 is great. ये बड़ा हो जाएगा, राइट? Yeah. समझा? Yes. So please can you Yes, repeat? sir. See, what they have given is the temperature T2 is greater than T1 and EA1 for the first reaction is greater than EA2 for the second reaction. So with this condition, ये वाला जो term है, it's always going to be positive. Do you agree? हाँ sir. And with EA1 greater than EA2, this entire term will be greater for the first reaction than the second reaction. And if this term is greater, then K2 by K1 will also be greater for the first reaction as compared with the second reaction. हाँ sir. So first reaction का जो rate constant है K dash upon K वो greater है for the second reaction. Okay. समझा. यहाँ पे ना K2 K1 को कंफ्यूज मत करना. यहाँ पे K2 by K1 को उन्होंने क्या किया है K dash by K ले लिया है और फिर दो रिएक्शन की बात की है फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस. तो फर्स्ट केस का रेशियो हो जाएगा K1 dash upon K1 एंड सेकेंड केस का हो जाएगा K2 dash upon K2. Got it? So like this was a comparatively easy question. But because हाँ of ये the इजी था बट खाली वो जो रेट कांस्टेंट दिया है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट मतलब समझने में अगर डिफिकल्टी आ गई तो फिर प्रॉब्लम है. अदरवाइज इट वाज इजी. फाइन. ओके. 16th में करेक्शन है. द आंसर इज ओनली बी.
अच्छा वो सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट. Arrhenius equation may be written as, if you observe that taken the derivative of log k with respect to temperature. Now Arrhenius equation in terms of log is log of k equal to minus EA by 2.303 R into 1 by Sure. T. हाँ Take log ln only now because it will be easy for derivative. हाँ एक्चुअली जब भी log बोलते हैं ना तो इट इज log टू द बेस 10 और जब ln लिखते हैं तो log टू द बेस e. तो उन्होंने ln ही कंसिडर किया है. Yeah, because they haven't written 2.3. हाँ तो एक्चुअली ये ln के फॉर्म में ही लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने दिया नहीं है. तो अगर ln लेते हैं तो माइनस ई ए बाय आर. अब सिंपल क्या करना है, डी बाई डी टी लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डेरिवेट करना है. सो डी बाई डी टी ऑफ लॉग ऑफ के, ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम माइनस ई ए बाय आर इंटू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर. सो दैट वुड बिकम ई ए बाय आर डी स्क्वायर. सिंपल ना. हाँ सर. और ई ए जो है वो डेल्टा ई दिया है उन्होंने, दैट इज सेम एज एक्टिवेशन एनर्जी ओनली. And option D में they have given k equal to a e raised to EA by RT. Is that correct? Negative sign missing. माइनस Negative sign missing है. ठीक है. तो with the absence of negative sign, obviously option D would be incorrect. तो इसका आंसर सिर्फ option B होना चाहिए. ठीक है. हेलो. हाँ सर. सर. हाँ. So the 16th one, so is that a PYQ? होगा, I don't know. याद नहीं है ऐसे. जेई मेन का बोल रहे हो कि एडवांस? The names may because so if they are making the log and again come mistake, then you know the sum is changing. मतलब I am thinking that sir अगर ऐसा sum आया and then people you know they raise that it was not log, it had to be ln. क्या फर्क पड़ता है? सी इवन इफ यू हैड टेकन 2.303 आर, फाइनली यहाँ पर प्लस ई ए बाई 2.303 आर टी स्क्वायर आता. अब चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मैच करेगा क्योंकि ए एंड सी ऑप्शंस आर विद द नेगेटिव साइन. समझा? Yes sir. सो इट वुडंट हैव मैटर्ड एक्चुअली. Okay sir. Okay. 17th, rate constant for a reaction varies with temperature as. So they have given ln of k. Now specifically ln दिया है, मतलब it's to the base e 14.34 minus compare that. 1.25 into 10 raised to 4 by t. So you can compare it with Arrhenius equation, which is ln of k equal to. This will be compared with ln of a ln of a minus EA by R. EA by R into 1 by t. ठीक है. तो now options को देखते हैं. The graph plotted in between log of k to the base 10 versus 1 by t is a straight line with EA value 24.83 kilocalorie. Tell me, when you plot a graph of log k to the base 10 versus reciprocal of temperature, what is the slope you get? EA by minus EA by 2.303. Minus EA by 2.303 R would be the slope. And this slope in the given equation is how much? 2.303 नहीं आएगा ना. Sorry. See, log k to the base 10 अगर आप करोगे हाँ, प्लॉट हाँ, तो फिर आपका ये वाला EA by R जो है ना वो EA by 2.303 R हो जाएगा. ठीक है. अब उनके हिसाब से उन्होंने जो दिया है ना, दिस वैल्यू इज ओनली ऑफ EA by R which is equal to 1.25 into 10 raised to 4. समझा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इस केस में हाँ, you can find EA by substituting the value of R equal to what? 8.3. 8.3. नहीं.
look at the value unit. किलो कैलोरी बोला है. Calorie. 0.0821. अरे that is liter atmosphere. So you can multiply by 8.3 and divide by अरे 4.2. भाई 8.3 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 4.184. व्हाट इज द रेशियो ऑफ 8.3 एंड 4.18? Might be around 2. 2. हाँ तो r को 2 लेना है. मैंने r की 3 वैल्यूज आपको बताई है. 8.314 is to be taken when you have to find the energy in joule. 0.082 लेना है when it is liter atmosphere unit. And 2 ले लेना है when it is calories. तो यहाँ सीधा सीधा 2 लेना है. समझा? Yes, sir. So in this case, it will be EA equal to 1.25 into 10 raised to 4 into 2, which is equal to 2.5 into 10 raised to 4 calories. या फिर 25 kilocalories. Right? Yes, sir. लेकिन this will be true only when you plot the graph of ln k versus 1 by t, right? Yeah. ठीक है. तो ऑप्शन ए अगर करेक्ट होना है तो ln k होना चाहिए. वो log k to the base 10 नहीं Sir, होना चाहिए. हाँ. but sir, they have asked the value of EA, no? They have not asked the value of slope. हाँ EA का वैल्यू द स्ट्रेट लाइन विद स्लोप नहीं बोला है ना. एनीवेज EA का वैल्यू जो है वो आपका 25 किलो कैलोरी के आसपास आ रहा है. ठीक है. It's correct now, sir. करेक्ट है. बट अगर log k to the base 10 वाला इक्वेशन होता देन यू वुड हैव इक्वेटेड दिस टर्म विथ EA by 2.303 r, जो कि आपको एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन में दिया है. आप देखोगे तो सिमिलर टाइप क्वेश्चन है बट खाली वहां पे ln k की जगह log of k to the base 10 दिया है. तो उस केस में जो आपका 1.25 into 10 raised to 4 है ना, that would get equated to this term. Understanding the difference? Yes, sir. ठीक है. तो उस केस में 26th वाला क्वेश्चन देखो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन किलो कैलोरी. नाउ दैट वुड गेट मल्टीप्लाइड बाय 2.303. तो इसको जब आप 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब आपका वैल्यू हो जाएगा 57.2 किलो कैलोरी. समझा डिफरेंसेस? Yes. So हाँ. we have to do 2.303 into r into the value, no? यस. तो हम r तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके ना यहाँ पर, ये वाला वैल्यू. Sir, I'm doing with the 26th one. हाँ तो वही बोल रहा हूँ. ये वाले क्वेश्चन में we have multiplied only r, but in the 26th question we would have further multiplied 2.303. That's why the answer we are getting is 25 times 2.3, which is 57.2. Yes, sir. दूसरा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज 14.34. No. No, because if you compare the ln of a you will get 14.34. To get a का value what would you do? Antigen. Now ये ln to the base e है. Convert to log 10. तो पहले तो आप करोगे 2.303 log of a to the base 10 equal to 14.34. फिर आप करोगे log of a to the base 10 equal to 14.34 डिवाइड बाय 2.303 एंड देन एंटीलॉग लेकर आपको a का वैल्यू मिलेगा. तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज नॉट 14.34. सो ऑप्शन बी आपका रॉन्ग है. समझा? Yes, sir. Option C, the rate constant at 500 Kelvin is 2.35 into 10 raised to minus 5 per second. Now to get the rate constant at 500, you have to just substitute T का value. Hello. Hello. Yes. Yes, yes. Yes, now we can. हाँ, to get the rate constant at 500 Kelvin, आपको सिर्फ T का value 500 substitute करना है. So ln of K will be equal to 14.34 minus 1.25 into 10 raised to 4, which is 10,000 upon 500. तो ये हो जाएगा आपका 20. हाँ कि नहीं? Yes, sir. 25.
So this would become 14.34 minus 25, which is equal to minus 10.66. Six. So next step में again to find out k का value, first thing is you will 2.303 say of 10. yes 2.303 equal to negative 10.66. फिर ये डिवाइड कर लोगे यहाँ पर 2.303. अब ये ऑलमोस्ट कितना आता है 2.34 सा 12 4 and and a 9 half. 9.2 आएगा, मतलब 4 टाइम्स, और फिर 10.7 लेकर ऑलमोस्ट 1.5, तो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है. ठीक है. अब अगर आप ये नहीं भी करोगे ना तो देखो कैसे सॉल्व करना है. k वुड बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 4 पॉइंट समथिंग समथिंग. You So, can't find anti-log of a negative value. What do you do next step? so Convert to log it. बोलो मुस्कान से. so the k का value is 10 raised to minus 4 ना. अरे ये 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, इट इज नॉट एग्जैक्टली 4. 4 से कुछ भी हो, but which power of 10 is given k? तो 10 raised to minus 4 is k. नहीं, वैसा गलत हो जाएगा. If log k is -4, then k will be 10 raised to -4. But अगर log k आपका -4.5 है, तो it will be 10 raised to -4.5. तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ बार 5.5 करेंगे, तो 10 का बार 10 raised to -5 हो जाएगा. Oh, okay. Yes, sir. अगर डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू है तो डायरेक्ट 10 के पावर में रेस करो. ये तो आगे सॉल्व करेंगे तो 1.5 बचता है ना. 1.5 मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम्स जाता है, तो 4.6 ले लेते हैं इसको. ठीक है, तो ये हो जाएगा बार 4.6. नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे इसको, Convert to bar. Convert to bar. तो बार 5.4 हो जाएगा. ठीक है, सो दिस विल बी समथिंग इनटू 10 raised to -5, और ये समथिंग को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट इज एंटी लॉग ऑफ 0.4? समवेयर बिटवीन Point व्हाट? something something. 2 and 3. यस, क्योंकि 2 का लॉग 0.3 है और 3 का लॉग 0.48 है, तो 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 पॉइंट समथिंग समथिंग वुड बी द आंसर. दिस वुड गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअली. तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ ना. गॉट इट. Yes, sir. हाँ, फोर्थ EA इक्वल टू 30.63 किलो कैलोरी. ये तो रूल्ड आउट है ना वैसे भी. Yes. अंडरस्टूड. Yeah. तो ये करेक्ट है. हाँ, then integer type में 23 I have already taken and rest of the questions are simple. Comprehension. Sir, हाँ, 19th one and multiple. So 19. 17 तो हो गया ना. 19. हाँ. 19. During decomposition of an activated complex, energy is always released, absorbed, does not change, reactants may be formed. B. So activated complex is just another name of Catalysis. नहीं, बताया ना मैंने, activated complex. It is simply the transition state of the reaction, जो कि highest energy point ये रहता है ना. This is your reactant, this is the transition state and this is the product. Single step अगर होगा तो transition state basically intermediate के जैसा है, which is highly unstable. Yeah. So from the transition state, when the product is getting formed, what can you observe with respect to energy change? Energy may be released. Maybe released or always released? Always release. Transition state is the highest energy, most unstable state of any reaction, whether it is exo or endothermic. So to get to the products, energy always is getting lowered. Yeah.
सो प्रोडक्ट अगर बनना है तो एनर्जी रिलीज होनी ही चाहिए हमेशा, चाहे एक्सो हो या एंडो. डू यू अग्री? Yeah. ठीक है. और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड में गया, then Reactions may there be is a formed. possibility that the reactants also might get formed if it is a reversible reaction. Yes, sir. ठीक है. और एनर्जी ऑब्वियसली चेंज तो होता ही है. मतलब आंसर इज ऑप्शन ए एंड डी. Chirayu, is this clear? Yes, sir. So Hmm. so it was like a decomposition reaction, no? So it should just take energy and break it, like CO3 का we do now. अरे decomposition reaction में reactants absorb the energy and then Yes. form the products. We are not talking about reactants. We are talking about something which is formed between the reactants and products, which is nothing but an intermediate. Okay. But so then why will it no? But then why will it give the energy? मतलब, I don't get it. Graphically, can't you understand this? See, the transition state is the maximum energy, highly unstable state of any reaction. Yes, sir. So to get to the products, what do you observe? The energy is getting decreased or increased from here. Reduced. तो जब एनर्जी कम होगी तभी तो कुछ स्टेबल प्रोडक्ट बन सकता है ना. Yes, sir. So energy Okay. will be always released, whether it is exo, endo, or any type of reaction. So then why D? Because if it is a reversible reaction, then energy decrease करके क्या वो reactant भी बना सकता है? Maybe. बना सकता है ना. अगर वो रिवर्सिबल हुआ तो इसलिए यहाँ पे मे भी आया. प्रोडक्ट्स तो बनेगा ही हमेशा, बट रिवर्सिबल होगा तो पीछे भी जा सकता है. Okay, sir. Okay. So Hmm. suppose instead of the option reactants may be formed, it is written like reactants are formed. Then should be a market or no? नहीं, क्योंकि हमेशा रिएक्टेंट्स बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना. Yeah. If it is a completely irreversible reaction, then from transition state it will only go to the product side. It will not come to the reactant side, right? Yeah. इसलिए यहाँ पर it is conditional statement, इसलिए may be formed is only correct. Are formed will not be correct. Clear? Yeah. Now DPP 4.6 में कुछ क्वेश्चंस मैंने जो कैंसिल किए थे वो तो आपको इग्नोर करने हैं, क्योंकि उसका पैरेलल कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शंस इतना डिटेल नहीं है आपको. ठीक है. Okay. Start with the 7th question. For a reaction A giving you B plus C, it was found that at the end of 10 minutes from the start, the total optical rotation of the system was 50 degree. Optical rotation is related to the optical activity. Okay. And when the reaction is complete, it was 100 degrees Celsius. Assuming that only B and C are optically active and dextrorotatory, calculate the rate constant of this first order reaction. Rate constant of this first order reaction. अब सुनो ध्यान से, क्या बोला है कि at the end of 10 minutes from the start, the total optical rotation मतलब B and C का मिला के 50 डिग्री था, and जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो B and C का टोटल ऑप्टिकल रोटेशन 100 डिग्री हो गया. और assuming that only B and C are optically active, इसका मतलब स्टार्ट में जब A रिएक्ट कर रहा है giving you B and C, what would be the optical rotation at the start? 0 degree. 0 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि A में ऑप्टिकल एक्टिविटी है ही नहीं, तो वो PPL को रोटेट करेगा ही नहीं. तो एट द स्टार्ट ऑप्टिकल रोटेशन 0 है. डू यू अग्री? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब हेलो. Could you repeat, sorry? हाँ. See, in the fourth line, they have given, assuming that only B and C are optically active and dextrorotatory.
ठीक है, इसका मतलब A is an optically inactive compound. हाँ. If it is optically inactive, will it rotate the PPL? Hello. No sir. So at the start, time t equal to 0, the optical rotation OR is equal to 0 degree, right? Yes sir. After 10 minutes, the optical rotation was how much? 50 degree. 50 degree. And at the end, matlab at time tending to Infinity. infinity, the optical rotation is becoming, 100 degree. sorry, not 100 degree. So up we have to find the rate constant. Now generally, how do we write rate constant for a first order reaction? Concentration के terms में कैसे लिखते हैं? 1/t log of A naught by A. So 1 upon, अगर ln में लेते हैं तो 1 upon या फिर 2.303 by t log of A naught by AT. What is A naught? 100 degree. 100. हाँ, but A naught क्या relate करते हैं हम? It is concentration of the reactant at the start and AT is the concentration remaining after a time t. बराबर. अब जब ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मतलब A naught will be equal to the product का whatever relation given at infinite time. हाँ कि नहीं? Yes sir. So can I say this is proportional to A naught? Yes sir. And what will be AT का value? 50 degree. 50 degree. अच्छा, had it been 60 degree, then AT का value क्या लेते हैं? 60 लेते हैं? 40, 60. Can you repeat? 40 ना, because remaining. मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये ऑप्टिकल रोटेशन आफ्टर 10 मिनट मान लो 60 डिग्री दिया, सॉरी, तो फिर द AT का वैल्यू वुड बी 60 या 40? 40. 40. Remaining 40. 40. Why 40? A naught is अच्छा हाँ 100 right ना. right right हाँ remaining हाँ रिमेनिंग वाला लेते हैं ना. हाँ हाँ 40 तो 40. बेसिकली इस रिलेशन को आई कैन राइट log टू द बेस 10 A naught की जगह R infinity minus R naught. R is the optical rotation over here upon R infinity minus RT. ऐसा कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? For volume. Yes. V infinity minus V naught upon V infinity minus VT, which I had given for decomposition of peroxide, where the volumes of oxygen were given in the data. तो जो volumes of oxygen है वो product का volume है, हाँ कि नहीं? Yes sir. ठीक है, तो इनिशियली ये लिक्विड होने की वजह से इसका वॉल्यूम 0 लिया था, इसलिए V naught की वैल्यू हमने 0 ले ली थी, and that's why the formula was V infinity upon V infinity minus VT. यहाँ पर भी ये 0 है, तो ये R infinity upon R infinity minus RT. समझा? Yes or no? Yes sir. So 2.303 into log 2 is, we know, 0.693, and then upon 10 would become 0.0693. With the unit of minute, it will become minute inverse. This would be the value. And the answer is, what is difference between B and C? The unit. Unit. इसलिए ध्यान से आपको relate करना है. The correct answer would be option C. Answer given is A, which is wrong. Answer का correction है यहाँ पे. So Hmm. I solved this sum, but I did it in another way. So I just did that T half is equal to 0.693 by K, because it was 60 degrees last time. So would हाँ. that work? नहीं, वो भी करेक्ट है. वो 50 से 100 हो रहा है इन 10 मिनट्स, मतलब दैट वुड बिकम योर हाफ लाइफ टाइम ओनली. तो बेसिकली आप ये रिलेशन जब देखोगे ना, तो 2.303 इंटू log 2, ये 0.693 अपॉन 10, ये बेसिकली आपका
डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना 0.693 अपॉन डी हाफ जैसा। Yeah. Yes, sir. ठीक है, अगर वो स्ट्राइक हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं स्ट्राइक हुआ तो फिर आप ये मेथड से भी कर सकते हो। समझा? क्योंकि ये 50 और 100 वाला रिलेशन था इसलिए डायरेक्ट आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली पूछा आपको, अगर 60 दिया होता तो वुड यू टेक 60 एज 80 या फिर 40? तो उस केस में 40 लेना पड़ता, राइट? Sir, but we don't know the order of the reaction. No? अरे दिया है ना फर्स्ट ऑर्डर, क्या नहीं पता? लास्ट स्टेटमेंट देख। Oh, okay, yes. Now 12th is a good question. There is the elementary reaction sequence shown in the figure. Which of the following equations are correct? So A is giving you B with the rate constant K1. B is giving you C with the rate constant K2. C is giving you D with the rate constant K3. And A is giving you D with the rate constant K4. Now you have to So B. verify the expression. हाँ, आंसर B है। अब मुझे बताओ dA by dt, if I want to find, what type of reaction do you observe with respect to A? The A is multiple giving you parallel B. reactions. It's a parallel reaction. A is giving you B and A is also giving you D with the rate constants K1 and K4. So how do you write minus dA by dt for a parallel reaction? K1 A plus K4. K1 plus K2 into concentration of A. K1 plus K2 नहीं, K4 लेना है इधर, K4, sorry. into concentration of A. This would have been a correct expression for the rate of a parallel reaction, right? Yes. Then dC by dt. Now C is basically an intermediate between what? B and D. B and B D. and D. So this is basically what type of reaction? इसको क्या बोलते हैं? Multiple. Consecutive या sequential reaction? तो sequential reaction में the rate for the intermediate is taken as K2B minus K3C. तो C is obtained from B ना, तो पहले K2B आएगा और फिर माइनस K3C आएगा। समझा? Yes. Yes. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया B. Similarly dd by dt पूछा है, तो dd by dt, now D is obtained from A also and from C also. तो बेसिकली ये ऐसा रिएक्शन है जहां पर D बन रहा है A से और Opposite of parallel. yes, but two reactants are giving you the same product, है ना? A से D K4 और C से D K3. ठीक है, तो इस केस में the product D is obtained from A as well as C but with the different rate constant. Then in this case the dd by dt would be equal to what? कैसे लिखोगे? K4A plus K3C. K4 Yes, K4 into A for the first reaction and minus K3C. माइनस क्यों भाई, दोनों से बन रहा है वो, it's getting हाँ, हाँ. formed. Yes, sir. Only in the sequential when you talk about the intermediate it will get subtracted. Otherwise parallel reaction में हमेशा addition आएगा. याद रखो ये simple concept. Understood? Yes, sir. 13. Acid hydrolysis of ester is a first order reaction and the rate constant is given by. So that famous equation we have already known, 2.303 by T into log to the base 10 V infinity minus V naught upon V infinity minus VT. Now ये ester related to hydrolysis है ना, it is what type of reaction? First order First दिया order. है, but it is something which is special. Pseudo first order है ना? All the hydrolysis reaction where the water is taken in
excess. Excess. is always an example of a pseudo first order reaction. ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है ना एसिड हाइड्रोलिसिस है, तो एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, बट इसी का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी होता है. Now when I say alkaline hydrolysis, so instead of the water, I need to use a base like NaOH. So now in this reaction, if I use a base, the base will actually get reacted with the acid to form. Salt. So इस reaction में instead of the acid and alcohol, you will get the salt of acid and alcohol. इसको बोलेंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. फर्क समझा? Yes. ठीक है, तो एसिड हाइड्रोलिसिस में you will get the carboxylic acid and alcohol. उसी का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस will give you sodium salt of acid and alcohol. Now if this sodium salt are of the fatty acid, fatty acids मतलब जिसमें ये R वाला चेन बहुत ही बड़ा रहता है of many carbon atoms starting with 11 and onwards, उनको fatty acids बोलते हैं. Then ये जो sodium salt of fatty acids बनते हैं ना, these are nothing but soaps. Sodium salt of fatty acids are nothing but soaps. तो जो हम बेदिंग के लिए सोप्स यूज करते हैं, हैंड वॉश के लिए सोप्स यूज करते हैं, वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जिसमें जो R वाला पार्ट है, इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स. And that's why this particular reaction is given a name famously as saponification of ester. Saponification of ester. ये सब ऑर्गेनिक में करेंगे by the way, but just question अगर आया तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, तो these are the two reactions. One is acid hydrolysis and another is alkaline hydrolysis. So acid hydrolysis में इसका जो rate law है, as per the pseudo first order, it is K times the concentration of only the ester, right? Yes, sir. But in case of alkaline hydrolysis, its rate is found to be proportional to concentration of ester as well as the concentration of the alkali used. फर्क ये है कि in the acid hydrolysis it follows a first order kinetic, but saponification के टाइम पे it is not a first order, it would be a second order kinetics. This difference is very important. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. Okay. तो अब यहाँ पर coming back to the question number 13. Acid hydrolysis of ester is first order and rate constant is given by this equation. So now, where V0, Vt and V infinity are the volume of NaOH required to neutralize acid present at a given time. If ester is 50% neutralized, then the relation of V infinity कौन सा correct है वो आपको verify करना है. क्या V infinity Vt के बराबर है, या Vt minus V0 है, या 2Vt minus V0, या 2Vt minus V0. Option C and D same हो गया है actually. क्वेश्चन क्लियर है क्या? You have an ester undergoing acid hydrolysis giving you acid and alcohol, right? Yes, sir. And alkali NaOH is used to neutralize the acid present at a given time. Okay. तो अब मुझे बताओ, let's say at time t equal to 0, let the amount of ester present be equal to A. इसका तो हम कंसिडर नहीं करते, ये इनिशियली 0 रहेगा. Yes or no? Then after a time t, let's say the acid and alcohol formed is X and X. So the amount remaining of ester will be
A minus X. A minus X, and as the time tends to infinite, A minus X will tend to become 0. 0. In that case, A will become equal to X, मतलब यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा. Correct. Yes, sir. So मुझे बताओ, initially what is the concentration of the overall reaction? A. Only A. After a time t, A plus X. this plus this मतलब A plus X के बराबर. And after infinite time, 2A. 2A. ठीक है. So can I say this is proportional to V naught at the start, this is proportional to Vt after a time t, and this is proportional to V infinity after infinite time. Yes. ठीक है. तो अब आपको रिलेट करना है, इज V infinity equal to Vt, are they equal? अच्छा, अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया है 50% न्यूट्रलाइज्ड. When you say 50% neutralized, मतलब X will become 0.5. and A minus X will become of initial, right? 0.5. तो ये भी हाफ ऑफ A हो जाएगा. तो अब जब ऐड करोगे तो ये कितना हो रहा है? 1.5. 1.5 A, राइट? तो अब V infinity Vt के बराबर है क्या? No. नहीं. Vt माइनस V नॉट के बराबर है. Vt माइनस V नॉट मतलब 1.5 A माइनस A. वेरीफाई हो रहा है क्या? No. नहीं. 2Vt माइनस V नॉट, 2 मतलब ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3A माइनस A, 2A आ रहा है. Yes, the third relation becomes correct. Hence, the answer is option C. समझा? Yes. तो सिंपल यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम वाला आइस टेबल वाला कॉन्सेप्ट हमने मोर और लेस यहाँ पर यूज किया. ठीक है. और फिर आपको यहाँ पर जो रिलेशन दिया है वो वेरीफाई करना था. एटीन्थ क्वेश्चन, ये मेंस का भी क्वेश्चन था, हमने सॉल्व भी किया है. In the reversible reaction of twice of NO2 giving you N2O4 with the rate constants K1 and K2, the rate of disappearance of NO2 is, what is asked? The rate. of N2O4. So it will be K1 NO2 raised to 2 minus K2 into 4. The rate for a reversible reaction will be K1 into reactant, which is NO2 ka square, minus K2 into the reactant of the backward, which is N2O4. But this is the rate. आपको rate नहीं पूछा है, आपको rate of disappearance of NO2 पूछा है. Now, what is the rate with respect to NO2? minus half. Minus half dNO2 by dt. तो आपसे माइनस हाफ dNO2 by dt नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 which is minus dNO2 by dt. तो ये हो जाएगा आपका 2 times of K1 NO2 का स्क्वायर minus 2 times of K2 N2O4. Is the difference understood? Yes, sir. So the answer will be not. हाँ, वैसे वो वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है उन्होंने. तो अगर ये ऑप्शन दिया होता तो कंफ्यूजन डेफिनेटली होता कि हाँ ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा. बट देन सिंस दे हैव आस्क्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस, दिस वुड गो रॉन्ग. समझा? Yes, sir. चलो लास्ट वन, इंटीजर टाइप का 23. The half-lives of two parallel path reactions are 4 hours and 12 hours respectively. Parallel path मतलब it's a parallel reaction, A giving you B and A giving you C.
So what is the average half-life decay of A? Average half-life. T1 into T2 upon T1 plus T2. And how K1 do you upon get that? K1 plus K2 into 100%. Uh-huh. K1 upon K1 plus K2 into 100%. No, that is to get the percentage of B. Right, sorry. What is the average rate constant for a parallel reaction? K1 plus K2. K1 plus K2. And they are saying that these are the two parallel path reactions. ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने ये K1 plus K2 लिया था, तो what was the order we had assumed here? First order. First order kinetics. तब जाके हमने रेट को कैसे लिखा था? रेट इक्वल टू K1 plus K2 into A, right? तो A raised to 1 लिया था ना हमने, Yes, sir. और इसको हमने क्या बोला था? K average, which is just the sum of K1 and K2. Now, if it is following a first order, can I write this as 0.693 upon T average, which is the half-life average? Yes, sir. K1 can be written as 0.693 by T1 and K2 can be written as 0.693 upon T2. समझा? So 1 upon T average is equal to T1 plus T2 upon T1 T2. तो आपसे जो पूछा है वो एवरेज हाफ लाइफ पूछा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है T1 T2 अपॉन T1 plus T2. This is how you derive. So we learn this now. You can learn, या you can just derive if you know the parallel reaction funda. तो अगर याद है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लो. You are having 4 into 12 upon 4 plus 12. So 4 4s are and 4 3s are. The average half life becomes 3 hours. समझा? बाकी कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना है. 19th क्वेश्चन भी मैंने कैंसिल करवा दिया है. Those questions are to be omitted. Okay, sir. The other questions are simple. You can try, and whatever doubts you have, you can WhatsApp me. So, Hmm. so your last year का S block का JEE Advanced का recording. Last year S block. JEE Advanced. I'll check. Actually, I missed the class, so if you have anything. Sir didn't send you the recording. Sir didn't take the recording. Oh. Okay. I'll He check just and did forward. MCQs. I mean, there wasn't anything as such. So, something extra was also there. Not really. I So don't think someone forward the notes to Chirayu, and if I have the recording, I'll just forward it. Okay, sir. Also to me, bhai. So I'll share it in the group. Okay.